सो आज की वीडियो में हम पाइथन इनहेरिटेंस पढ़ने लगे। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इनहेरिट जो ऊप्स का था मेन कॉन्सेप्ट्स वो पढ़े थे, और आज हम पढ़ने लगे पाइथन इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस अलाउज यू टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लास. Parent class is the class being inherited from, also called base class. Child class is the class that inherits from another class, also called derived class. So inheritance means एक पेरेंट क्लास से जब चाइल्ड क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं तो हम उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. सो पहले इसको अगर यूज़ करें तो आपको क्या करना, पहले एक पेरेंट क्लास बनानी पड़ेगी. एनी क्लास कैन बी ए पेरेंट क्लास. तो द सिंटैक्स से कोई भी क्लास पेरेंट क्लास होगी. अगर उस क्लास के अंदर कोई सब क्लास बनाओगी तो वो चाइल्ड क्लास होगी, तो फिर ये पेरेंट क्लास बन जाएगी. तो यहाँ पे कोई भी, अब जैसे इन्होंने बना ली, एक क्लास बना ली पर्सन, ठीक है. क्रिएट अ क्लास नेम पर्सन विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज एंड प्रिंट मेथड, प्रिंट नेम मेथड, ठीक है. तो मेथड इसका प्रिंट नेम है. बाकी ये एफ सेल्फ नेम, एफ नेम है. तो ये जब इसमें कॉल किया ना, ये पेरेंट है इसकी, ये इसकी ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है. जब सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इसने इस वाली से बुलाई तो ये दे देगा इसको, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है. तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस. इस वाले की प्रॉपर्टी, इस क्या बोलते हैं, इस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी, मेथड की जो प्रॉपर्टी थी, वो जब इसमें आई तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास. और चाइल्ड क्लास का भी फास्ट एंड फास्ट रूल नहीं होगी. टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द फंक्शनैलिटी फ्रॉम अदर क्लास, सेंड द पेरेंट क्लास एज अ पैरामीटर विद क्रिएटिंग द चाइल्ड क्लास. तो पैरामीटर हमने सेल्फ लिखना है. सेल्फ मतलब ये, इसी का ही सारा कुछ लिखना है. तो इसलिए हमने बस ये ऊपर वाले के एट्रीब्यूट जो हमने वो लिखने हैं, तो वो हमारा सारे मिल जाएगा. क्रिएट क्लास नेम स्टूडेंट विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पर्सन क्लास. एक ऐसी क्लास नेम बनाओ जो स्टूडेंट विच विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पर्सन क्लास. पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करें. क्लास स्टूडेंट पर्सन, और जो पास करके आपकी बन जाएगी, आप मान पाओ तो चाइल्ड क्लास में. एक एग्जांपल दिया हुआ है, यूज द स्टूडेंट क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट द प्रिंट नेम मेथड. पहले स्टूडेंट यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना लो और उसके बाद एग्जीक्यूट करो द प्रिंट नेम मेथड. ओके, सो ये था. ऐड द इनिट फंक्शन. सो फार वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट. अभी तक हमने चाइल्ड क्लास बनाई जो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज, मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. पेरेंट्स से जो अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है. So we want to add init function to the child class instead of pass keyword. हम pass keyword छोड़ के रहने देने के मतलब नहीं करेंगे, हम init function को child class में करेंगे. Add the init function to student class. Student class में init function ऐड कर ले. class student person डिफाइन कर लेते init self name reference. And when you add the init function, the चाइल्ड क्लास विल नो लॉन्गर इनहेरिट द पेरेंट क्लास. जब हमने इनिट डाल दी तो चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट नहीं करेगी पेरेंट क्लास में से, इनिट फंक्शन में से. सो द चाइल्ड्स इनिट फंक्शन ओवरराइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स इनिट फंक्शन टू कीप इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट क्लास इनिट फंक्शन एड अ कॉल टू पेरेंट इनिट फंक्शन. सो क्लास स्टूडेंट पर्सन define init self f name l name person init self name and l name. Now we have successfully added the init function and keep the inheritance of the parent class, and we are ready to add functionality in the init function. We use the super function. Python also has a super function that will make the child class inherit all the method and properties from its parents. So class student person define init self function name l name super init f name l name. By the super function you do not have to use the name of the parent element. It will be automatically
इनहेरिट मेथड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट। जब हम ये सुपर करते हैं तब हमें इनहेरिट के लिए लिखने की वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इनहेरिट कर लेते हैं। यूज़ करने के नाम पेरेंट का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे वो खुद ही इनहेरिट कर लेते हैं। Add properties, add a property called graduation year to the student class. Class student person defined the init self f name l name super init f name l name student dot graduation year is equal to 2019. So ये थी हमारी एक एग्जांपल। अब इसके बाद क्या है कि in the example below the year 2019 should be available and passed to the student class. When creating student objects, to do so add another parameter in the init function. Add a year parameter and pass the correct year when creating object. Add a year parameter and pass the correct year when creating objects. Class student person def init self name f name l name year and super init f name l name to self dot graduation year x is equal to student Mike Orson 2019. So अगली अब ऐड मेथड्स की जो है वो देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ऐड मेथड में क्या है कि ऐड मेथड कॉल्ड वेलकम टू द स्टूडेंट क्लास। वेलकम नाम की मेथड जो है आपने वेलकम नाम का जो मेथड है वो स्टूडेंट क्लास में आपको आप क्लास स्टूडेंट पर्सन डिफाइन करते हैं इनिट एंड सेल्फ एफ नेम एल नेम ईयर सुपर इनिट एफ नेम एल नेम स्टूडेंट डॉट ग्रेजुएशन ईयर इसके लिए फंक्शन डिफाइन किया है वेलकम। फिर उसके आगे सेल्फ, तो फिर प्रिंट वेलकम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम टू द क्लास ऑफ द सेल्फ ग्रेजुएशन। पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म, so Python polymorphism, the word polymorphism means many form। polymorphism का क्या मतलब होता है, many types, and in programming it refers to method function operators with the same name that can be used many object classes। function polymorphism, an example of Python function that can be used in different objects is len function। स्ट्रिंग के लिए भी आप लेन जो फंक्शन है लेंथ फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर और डबल में भी आप लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी दे देता है आंसर लेंथ दे देगा हमारे कुछ। फिर इसके बाद हम डिक्शनरी में भी यूज़ कर सकते हैं लेंथ फंक्शन। रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। हाँ, तो वो की वैल्यू पेयर जो है डिक्शनरी की वो भी वापस दे देगा। और क्लास पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफन यूज्ड इन क्लास मेथड्स एंड वी कैन हैव मल्टीपल केसेस with the same method। we can have multiple cases with the same method। for example, say we have 3 classes car, boat, plane and they all have a method called move। so different classes with the same method। class car define init self brand model and drive self drive move self class code in itself brand model self dot brand is equal to brand self dot model is equal to model and फिर define self brand model, ठीक है। move फिर self कर दिया move को, फिर fly हो गया, फिर car one is equal to Ford, फिर car two is equal to Ford Mustang, फिर food I pizza 2020 and प्लेन बोइंग 747। सो फॉर एक्सीडेंट ये हमने इनहेरिट किया एक एक को एक एक से एक एक में ये करके इनहेरिट करके देखा और उसने हमको जो है आंसर दे दिया। सो अगला देख लेते हैं।
inheritance class polymorphism. Inheritance class polymorphism. So what is it? What about classes with child classes with the same name? Can we use polymorphism there? Yes, if we use the example above and make a parent class called vehicle and class car for plane vehicle and methods can override them. So ये हमने अभी किया है कैसे उसके नीचे बस बाकी सारा सेम नीचे लूप लगाई हुई है. So child class inherits the properties and methods from the parent class. जो child class है वो properties कहाँ से inherit करता है? Parent class. ठीक है. In the above example, you can see the car class is empty, but it inherits brand, model, and move from vehicle. The boat and plane classes also inherit brand, model, move, vehicles, but they both override the move method. Because of polymorphism, we can execute the same method of all classes. So encapsulation now, next topic. So now we will do encapsulation. So Python encapsulation हाइडिंग मान लो इसको कुछ एब्स्ट्रैक्शन और encapsulation होता है ये कुछ कैप्सूल वैसे हाइड ही करते हैं इंटरनल डिटेल्स से. Encapsulation is about protecting data inside a class. It means keeping data properties and methods together in a class while controlling how the data can be accessed from outside the class. This prevents accidental charges of your data and hides the internal details of how your class works. So private properties. In Python, you can make properties private by using a double underscore prefix. So you can make your properties private by using a double underscore prefix. So here is the example. A function class बना ली person और function बना लिया init. Self dot name age, self dot name is equal to name and self dot age dot underscore age is equal to age. Person है जो हमारा है ml. P1 is equal to person ml, age is 25. So print P1 dot name and P1 dot age. So now get a private property value. So if we want a private property value, use a getter method to access a private property. फिर क्लास बने एक पर्सन नाम की, फिर डिफाइन कर दिया एक फंक्शन इनिट और जिसमें सेल्फ होगा, नेम होगा, रेज होगा. सेल्फ हमने लिखना पड़ेगा कि ताकि वो चाइल्ड क्लास जो है वो उसको असेस कर. सेल्फ डॉट नेम इज नेम, सेल्फ डॉट एज एंड डिफाइन कर दिया एक और फंक्शन गेट एज. उसमें सेल्फ डाल दिया तो सारी प्रॉपर्टी जो ऊपर से वो इनहेरिट कर लेगा जो भी है आर्ग्यूमेंट्स नहीं वो पैरामीटर्स कर लेगा. पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में याद रखिएगा. तो P1 is equal to person Tobias and 25 P1 dot get age. Set private property value. Set private property value. To modify a private property, you can create a shutter sound. So the shutter method can also validate the value before setting it. Use the setter method to change a property. So class आगे init self name age self dot name name age कोई जो भी है ये सारी आगे and set कर दी age. सेल्फ की अगर एज 0 से बड़ी है तो सेल्फ डॉट एज एज, अगर नहीं है तो एज मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक. एल्स प्रिंट एज मस्ट बी पॉजिटिव. P1 डॉट पर्सन Tobias 25 प्रिंट P1 डॉट गेट एज P1 डॉट सेट एज इज 26. तो जो एज आएगी वो 26 होगी.
सो वाई वी यूज़ इनकैप्सुलेशन। सो मैंने यही पूछा था अभी कि पहले तो यही पढ़ना होता है कि इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब क्या है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है किसी चीज़ को हाइड करना, अपनी प्राइवेसी को हाइड करना, ये तो इसकी अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है इनकैप्सुलेशन की, क्या डेटा प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन, यू कैन वैलिडेट डेटा बिफोर सेटिंग इट, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, internal implementation can change without affecting external code. Control, you have full control over how data is accessed and modified. So ये encapsulation की एक प्रैक्टिस है, यूज encapsulation to protect and validate data. So यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया इनइट, एक सेल्फ नेम सा नेम है, सेल्फ ग्रेड है, फिर एक नया फंक्शन बनाया उसमें सेट ग्रेड है, फिर एक और उसमें मेथड है वैसे, फिर एक गेट ग्रेड, फिर गेट स्टेटस, और इन्फिनिटी इफ एल्स की एक कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पे, अगर ग्रेड जो 60 से ऊपर होगी तो पास, तो फेल। सो स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट एमएल एंड स्टूडेंट डॉट सेट ग्रेड 85, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड एंड प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट स्टेटस। Protected properties. Python also has conversion for protected properties using a single underscore breaks. And create a simple protected property, class person, function init and self names आपकी, and फिर यहाँ पे पर्सन एलिनेस, तो इसका भी सेम ही है, कैन असेस बट शुडंट, हम असेस करते हैं, हम नहीं करनी। इनहेरिटेंस का ये होता है कि कोई और आपकी वो जो है चीज़ है वो असेस ना कर पाए। तो हम करेंगे प्राइवेट मेथड्स, यू कैन मेक प्राइवेट मेथड यूजिंग डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स, ये प्राइवेट हो गया मेथड जो आपका अंडरस्कोर वैलिड है। तो यहाँ पे जब हमने इसको कॉल किया ये कैलकुलेटर में, ये सारे बना के जब हमने यहाँ पे इसको वैलिडेट वाले को कॉल किया, आ ही नहीं कहीं, तो इनवैलिड नंबर यहाँ पे आंसर आ गया, तो इसलिए हमारा ये प्राइवेट हो गया। तो अब आया नेम मैंगलिंग। Name angling is how Python implements private properties. Name angling is how Python implements private properties and converts when you use double underscores. So Python automatically renames it internally by adding a class name in front. For example, age becomes person age. So see how person mangles the name. Class person by a function in itself name age. P1 person ml30, so and P1 person age. So this is how name angling is happening. Now Python inner classes. So Python inner class is a class inside another class. इनर क्लास नाम से पता लग रहा है क्या है, इनर क्लास क्या है, क्लास इनसाइड अ क्लास नोन एज इनर क्लास। द इनर क्लास कैन assess the properties and methods of the outer class. Inner class are useful for grouping classes that are only used in one place. So inner classes are useful for grouping classes that are only used in one place, making your code more organized. And create an inner class, create outer class, define in itself, define in itself with the self dot name outer class, class init self dot name inner class with space l, print this is the inner class, और जो भी outer class वगैरह वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। Accusing inner class from outside. To assess the inner class, create an object of the outer class and then create the object of the inner class. So आपको क्या करना है, एक outer class का object बनाना है, एक inner class का object बनाना है, बस आपका काम जो है वो हो गया। फिर एक एग्जाम्पल है उसके नीचे, एग्जाम्पल क्या है, assess the inner class and create an object। इन क्लास आप assess करो और एक ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट कर दो। क्लास आउटर डिफाइन कर दी इन इट सेल्फ सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू सेल्फ इनर क्लास इनर डिफाइन कर दी इन इट सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू डिफाइन कर दी सेल्फ प्रिंट हेलो फ्रॉम इनर क्लास, आउटर इज इक्वल टू आउटर इनर डॉट आउटर डॉट इनर एंड इनर डॉट डिस्प्ले। फिर असेसिंग आउटर क्लास फ्रॉम इनर क्लास। आउटर क्लास को हम इनर क्लास से कैसे असेस कर सकते हैं। इनर क्लासेस इन पाइथन डू नॉट ऑटोमेटिकली हैव एन एक्सेस टू द आउटर क्लास।
इनर क्लास होती है उनको डायरेक्टली कोई भी असेस नहीं होता आउटर क्लास से. सो इफ़ यू वांट द इनर क्लास टू असेस द आउटर क्लास यू नीड टू पास द आउटर क्लास इंस्टेंस एज अ पैरामीटर. अगर आप ये चाहते हैं करना तो आपको इनर क्लास वगैरह जो है वो आउटर क्लास में एज अ पैरामीटर डालना होगा. सो example can pass the outer class instance class outer init self set dot in मेरे classes are self dot outer फिर in display dot self and outer is equal to outer inner dot inner is equal to outer dot inner and inner dot is so नीचे practical example. Inner classes are useful for creating helper classes that are only used within the context of the outer class. Use an inner class to represent the function. And if a class is called init cell dot brand model, cell dot brand is equal to brand, cell dot model is equal to model, cell dot engine is equal to cell engine. And class engine define करते हैं init self dot status is equal to on self dot status is equal to running फिर print engine started stop self जो भी है ये engine के related है उस पर ये है example है practical Corolla गाड़ी multiple inner class so that is known as multiple inner class. So class एक computer है उसके अंदर एक function है जो हमने लिखा है उसी के अंदर ये उसका जो method है. So उसके अंदर CPU और RAM तो एक और क्लास है उसमें CPU और क्लास उसके अंदर RAM और उसको बाद में हमने असेस किया हुआ मल्टीपल इनर क्लास भी हम बना सकते हैं. तो ये हमारा उसके कंसेप्ट जो है वो चलते फाइल हैंडलिंग की तरफ. फाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन. फाइल हैंडलिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपने कुछ भी वेब एप्लीकेशन का सामान हैंडल करना. पाइथन हैज सेवरल फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग फाइल्स इन पाइथन is the open function. The open function takes two parameters, file name and mode. There are four different methods, modes for opening a file. Read default value opens a file. Reading a file if the file does not exist. Append opens a file for appending. Creates the file if it does not exist. Write opens a file for writing. Creates the file if it does not exist. Creates the specified file. Returns an error in the file exists. So in addition you can specify if the file should be handled as a binary or text module. So text as a default value text mode, be a binary module. So this is also a very basic one. Syntax क्या है हमारा open file reading is it is enough to specify the name of the file. जो भी आपने हैंडल करना उसके नेम जो है फाइल का वो आपको जो है फिजिकल ओपन डेमो फाइल डॉट txt. सो कोड दोनों नीचे भी सेम है ओपन डॉट rt हो गया. सो r and t are the text of the default value. You do not need to specify that. तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जो टैब्स हैं तो इनको हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलते हैं पाइथन रीड्स फाइल. अब फाइल जो है वो रीड भी तो करनी है इधर. So assume we have the following file located in the same folder as Python. एक हमारे पास फाइल है जो सेम उस पे लोकेशन पे जहाँ पे Python. ठीक है तो डेमो फाइल डॉट txt. So hello, welcome to the demo file dot txt. This file is for testing purposes. So to open the file, build function. Open function returns a file object which has a read method for reading the content of file. जिसमें read method है और file का content जो है read करने के लिए. So f is equal to open demo file dot txt printf dot read
If the file is in different location, you will have to specify the file path like this. Open a file on the different location. So f is equal to open the my file welcome.txt. So we have to run the transfer using the with statement. You can also use the with statement with an opening with the opening file. You can use the with statement with the opening file. Use the with keyword with open demo file.txt as f print f dot read. So close file. It is a good practice to always close the file when you are done with the file. If you are not using the file statement, you must close a statement in order to close the file. Example: close the file when you are finished with it. If it is to open demo file.txt, f.read line and f.close. So you read only parts of the file. By default, the read method returns the whole text, but you can also specify how many characters you want to return. Read is equal to 5 first characters of the file with open demo file.txt as f print f.read lines. You can return one line by using the read line method. So with the open demo file.txt as f print f.read line. By calling read line 2 times, you can read the 2 first lines. read line को आके आप जो 2 times है वो आप जो line को read कर सकते हो. So read 2 lines of the file with open demo file.txt as f print f.read line print f. By looking through the lines of the file, you can read the whole file line by line. And loop through the file line by line with open demo file.txt as f for x in f, and then you have to print x. दी है तो आपकी हो जाएगी आपकी जो है रीड लाइन. अगला है Python file write. So if you want to write something in that file, so you can also write in the file. So if you want to write an existing file में अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, to write an existing file, you must add a parameter to the open function. Append will append the end of the file. The write will overwrite any existing content and open the file in demo file.txt and append the content to the file. So with open demo file.txt, a as f.write. Now the file has more content. With open demo file txt as f and print f.read. So आपका जो भी है आ जाएगा. So overwrite existing content to overwrite the existing content to file. We use w for overwriting existing content. So with open demo file.txt, w as f.write. Oops, I have clicked the content. And then with open demo file.txt as f print f.read. So आप read भी कर सकते हो. So create a new file. So to create a new file in Python, use the open method with the one of the following parameters. X create will create a file, returns an error if the file exists. Append will clear the file if the specified file does not exist. Write will create a file which is specified file does not when if the specified file does not exist. So create a new file, myfile.txt. I will open myfile.txt. X result a new empty file is created. Python delete files. Python delete file. To delete a file, you must include the OS module and run its OS function. So remove the file demo file.txt,
import os and import os.remove demo file.txt. Check if the file exists. To avoid getting an error, you might want to check that this file exists before you try to delete it. Check if exists, then delete it. Import os and the demo file.txt and os.remove demo file.txt. So else print the file does not exist. Delete folder. To delete an entire folder, use the osrmdir method. Remove the folder my folder. Import osrmdir my folder. So this is now Python modules. How many modules are there in Python? So अब ये आ गया हमारे पास numpy ट्यूटोरियल. अरे numpy नहीं बनाना तो numpy कहाँ से है? So ये वाली हमने कर ली थी सारी फाइल. अब हम करेंगे Python delete files. So delete भी कर दी checkable file. delete भी कर देते. So अब हम numpy ट्यूटोरियल पे थे. ठीक है, ठीक है. Learn NumPy. NumPy is a Python library NumPy is used for working with arrays. So learning by reading. We have created a 43. ठीक है. So starting with basic. So learning with the NumPy functions. So introduction, getting started, and learning with examples. So what is introduction? So what is NumPy? NumPy is a Python library used for working with arrays. Arrays को अगर हमें साथ में काम करना है तो हमें Python की जो NumPy लाइब्रेरी है उसमें से करना पड़ेगा. So now I think so. NumPy was it has also functions working in domain of linear algebra, Fourier transform, and matrices. NumPy was created by 2005 Travis Oliphant. It is an open source program, open source project, and you can freely use it. NumPy stands for numerical Python. NumPy जो है वो numerical Python के लिए stand करता है. ठीक है. So why use NumPy? हम NumPy क्यों यूज़ करते हैं? So हम NumPy why is NumPy हम इसलिए यूज़ करते हैं that in Python we have lists that serve a purpose of arrays, but they are slow process. जो NumPy Python में होते हैं list वो purpose of array करते हैं, but they are slow process, वो slow हैं. So NumPy aims to provide an array and objects that is up to 50x faster than traditional Python list. ये faster है इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद array object in the NumPy is called NADRAY, NDARray ऐसे कुछ लिखा हुआ. It provides a lot of supporting functions that make working with end array very easily. So arrays are very frequently used in data science, where speed and resources are very important. ठीक है. And data science is a branch of computer science. We all know that. We know where we study how to use and how to derive in that only. So why is NumPy faster than lists? So NumPy is faster than lists. NumPy arrays are stored at the one continuous place in the memory, unlike lists. So processors can manipulate them efficiently. The behavior is called locality of reference in the computer science. This is the main reason why NumPy is faster than lists. Also, it is optimized to work with the latest CPU architecture. So अब है अगला, which language is NumPy written in? अब NumPy कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है? NumPy is a Python library and it is written in particularly in Python. But most of the parts that require fast
computation are written in C or C++. Okay. Where is the NumPy code base? The source code of NumPy code base. The source code of NumPy is the GitHub repository. NumPy getting started. अब NumPy हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसको इंस्टॉल कर लो, तो इंस्टॉल ही नहीं हो रही है। अगर जब आप NumPy इंस्टॉल कर लोगे तब import NumPy is np and import NumPy is np. So example import NumPy is np and np को भी वही checking NumPy version। तो अगर ये आपको करना तो import NumPy is np print np dot version। तो ये करके आप वर्जन पता कर सकते हैं। तो हम करेंगे array create। So creating करेंगे हम array। तो create a NumPy and array object, and NumPy is used to work with arrays. The array object in the NumPy is called NdArray. We can create a NumPy and array object by using the object of the array and function. Okay, so important NumPy as np arr and np dot array 1 2 3 4 5 print arr। so array जो भी प्रिंट कर देगा, टाइप भी रहेगी अगर हमने प्रिंट करनी है, ये वो भी करेंगे। सो अब अगला क्या है हमारे पास, to create a NdArray we can pass a list, tuple or any array like object into array. So method, and it will be converted into an NdArray. So use a tuple to create a NdPy array. Important NumPy is np arr np dot array 1 2 3 4 5 and dimensions in array. So dimension in array is one level of array depth. Nested arrays. Okay, so nested arrays are arrays that have arrays as element. Nested element क्या है, जिसमें array as elements use। so zero D arrays। zero D arrays क्या है, zero D arrays or scalar are the elements in the array. Each value in an array is zero D array। create a zero D array with value 42। एक zero D array जिसकी value क्या है 42। so a 1D array, an array that has 0D arrays as its element is called unidimensional or 1D array. These are the most common and basic arrays. These are the most basic and common. Create a 1D array containing the values 1 2 3 4 5. Import NumPy as np and arr as np 1 2 और print arr। फिर अब ये 1D था, अब 2D करते हैं। 2D array से an array that has 1D array as its element। जो 0D होता है वो क्या होता है, जिसमें हम यूज़ करेंगे स्केलर एलिमेंट्स एज एरे। 1D क्या होता है जिसमें 0D के एरे को एलिमेंट्स को एज एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। 2D क्या होता है जिसमें 1D यूज़ करते हैं। They are often used to represent matrix or 2D second order tensors। So create a 2D array containing two arrays with value 1 2 3 4 5 6। so create a 2D array containing 2 5 6। import NumPy as np arr is equal to np 1 2 3 4 5 6 and print कर देंगे हम array को। so 3D array, an array that has 2D arrays, एक array 2D arrays with matrices as its elements is called 3D array। okay, these are often used to represent a third order tensor। so these are used to represent a third order tensor। example 2D array with a 2D array, both containing two arrays with the values 1 2 3 4 5 6। import NumPy as np arr is equal to np dot array 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 print arr। जब value करते हैं check how many dimensions the array has। NumPy array has provided the NdInvent rule that returns an integer that tells us how many dimensions the array has। so we have to now check that how many dimensions array has। so import NumPy as np
A is equal to np dot array 42, B is equal to np dot array 1 2 3 4 5, C is equal to np dot array 1 2 3 4 5, ये अलग अलग बना के फिर चारों को इंक्लूड फिर हाई डायमेंशनल arrays. What are high dimensional arrays? So import numpy as np and array is equal to np dot array 1 2 3 4. So nb is equal name is equal to parent. So number of dimensions is equal to arr and जो भी अभी हमारी dimension of array जो भी print करते हैं. In this array the innermost dimension, fifth dimension, has four elements. The fourth dimension has one element, that is a vector. The third dimension has one element, that is the matrix with the vector. The second dimension has one element, that is 3D array, and the first dimension has an element, that is 4D array. So these are the elements. Numpy array indexing. So now indexing. So numpy indexing. What is numpy indexing? Assess array elements. Array indexing is the same as assessing an array element. You can assess an array element by referring it to index number. You can assess an array element by referring to its index number. The index in the numpy start with 0, meaning the first element has the index 0 and the second has etc. 1. Get the first element from the following array. Array is np dot array 1 2 3 4 5 print arr 0. So now print arr फिर 0 करते हैं. And second example देखते हैं. Get the second element from the following array. Import numpy as np arr is equal to np dot array 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and print array. Early example है. Get the third and fourth elements of the following array and add third or fourth follow or फिर इसको add करते हैं. Import numpy as np arr is equal to np dot array 1 2 3 4 and print arr2 plus arr3. So assess 2D arrays. To assess elements from 2D arrays, we can use comma separated integers representing the dimension and the index of elements. जो represent करेंगे index और element. So think of 2D arrays like a table. So हम एक बार सोचते 2D array like a table of the rows and columns, and with the dimension represent the row and the index represent the column. Assess the element on the first row, second column. Import numpy as np array is equal to np dot array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Print second element on first row arr 0 1 and import the element on second row and the fifth. Import numpy as np arr is equal to print fifth element. 3D array is to assess element on the comma separated assess the third element of the second array of the first array. Import numpy as np and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and print array is 0 1 2. So now example explained. Arr 0 1 2 3 prints the value 6 and this is why the first number represents the first dimension, which contains two arrays. So since we selected 0, we are left with the first array. हमने 0 select किया, first array से we are left with the first array. 1 2 3 4 5 6. The second number represents the second dimension. Second number of second dimension represent करता है, which also contains two arrays. वो भी contain क्या करते हैं? दो arrays 1 2 3 and 4 5 6. Since we have selected 1, we are left with the second array. The third number represents the third dimension, which contains three values 4 5 6. Since that we have selected 2, we selected 2, we end up with the third value. Negative index. Use negative indexes to assess an array from the, we can use the assess and
Print the last element from the second dimension. Import numpy as empty arrays from numpy.array and last element from second dimension is 1, minus 1. Okay, so this was a Python numpy Python index. So numpy array slicing. So what's slicing? What is slicing? Slicing in Python means taking elements from one given index to another given index. Slicing in Python means taking one element from one given index to another. We pass slice instead of index that like the start and. We can define the step like this: start and step. If we don't pass, start is considered it's 0. If we don't pass, and it is considered as 0. So if we don't pass the considered length of an array in that dimension, if we don't pass the step, it is considered as 1. Okay, so so यहाँ पे एग्जाम्पल है since like elements from index 1 to index 5 from the following array, import numpy as empty array empty dot array 1 2 3 4 5 and 5 6 7 arr 1 2 5 and arr. So this is going to include the start index but excludes the end index. Since elements from 4th index to the second index, so since elements from the beginning to the index 4 not included. So since the elements are beginning not included, so import the numpy as empty arr empty dot index not included. So np array not to negative slicing. Now we then we will go to negative index. So import numpy as np and arr np dot array 1 2 3 4 5 6 7 and print arr minus 3 minus 1. So ये हमारे जो भी स्लाइसिंग होते हैं तो स्टेप आ गए. यूज द स्टेप वैल्यू टू डिटरमाइन द स्टेप ऑफ स्लाइसिंग. अब हम स्टेप वैल्यू करेंगे इंडेक्सिंग का स्टेप क्या है. So return every other element from index 1 to index 5 include numpy as empty arr is empty dot array 1 print array 1 ratio 5 ratio 2. ये इंडेक्स जो सारी जो इनपुट 1 से 2 के बीच में है कर देगा प्रिंट. दो का डिफरेंस है. ये लास्ट में भी दो इसी का मतलब है. ये जो अगर ये प्रिंट करेगा तो मेरे ख्याल से क्या करेगा तो दो छोड़ देगा तो 2 और 4 लिस्ट ये करना पड़ा 2 और 4 मतलब इतने ही प्रिंट के वन होता है. जितने 0 1 2 3 4 and 5. सो दो छोड़ने शुरू तो ये पहला ये छोड़ा 2 और ये 2 4 ही करते हैं. Return every other element from the entire array. सारी every other example from the entire array include numpy as np array is empty dot array 1 2 3 4 5 6 7 array ratio 2 and slicing to the arrays from the second element. Since elements from index 1 to was not included, import numpy as empty arr is empty array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 print arr 1 1 ratio 4. Remember that the second element has index 1. Remember क्या करना है, second index के पास element है तो है 1. From both elements return index 2. दोनों एलिमेंट में हम क्या रिटर्न करेंगे तो index 2 को हम रिटर्न करेंगे. Import numpy as empty arr is empty dot array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and print arr 0 ratio 2 index 2 और 2 को रिटर्न करेंगे. Okay, maybe so from both elements of the index 2 4 index 4 not included, this will return the 2 day array. Not included in index 2 day array जो है 0 के data types. So what are Python data types? Data types in Python are string integers. सारी जो है
वही है, सेम है, वो सेम रहती हैं, ठीक है। इंटीजर यूज टू प्रेजेंट 1 2 3 4 1 -1, इंटीजर -1 -2 करता था। फ्लोट 1.2 भी था। फ्लोट ये करता बुलियन ट्रू फॉल्स में करता है, ये भी हमें सारों को पता ही है। सो कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है अल्फान्यूमेरिक, ठीक है, सारे कर देता है वो भी मोस्टली। एंड data types in NumPy. So what are the data types used in NumPy? NumPy has some extra data types referred to data types with one characters like I for integer, U for inside integer, etc. Below is a list of all data types in NumPy and the characters used to represent them. And I integer, B boolean, U inside of float, C complex, and I integer, B boolean, U inside float, okay. So S के लिए string, Unicode के लिए string, and E आएगा fixed chunk of money of other type, void. So checking the data type of an array. So we are checking the data type of array की जो data type है उसको हम अब check करेंगे. So import NumPy type of an array object NumPy np.array. So 1 2 3 4 5 array जो है वो है d.type, array क्या है d.type हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें चाहिए गेट द डेटा टाइप ऑफ एन array containing strings। डेटा टाइप एक array गेन करेंगे जो कंटेन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर रहा है। So creating array with a defined data type, we use the array function to create arrays. This function can take an optional argument d type that allows you to find the expected data type. Creating arrays with defined data type है कि हम पहले ही data type describe करते हैं, उसके बाद ये देते हैं। So import NumPy as np ar is equal to np dot array 1 2 3 4 5 d type as and print arr dot d type. So for I, U, F, S and U, we can define size as 10. Okay, so create a number of NumPy 4 bytes का इंटीजर बनाएंगे इसमें हमने। अब import NumPy as np arr 1 1 2 3 4 5 डेटा टाइप आ गया i4, so d टाइप आ गया i4 and print arr dot d type जो भी हम वो print हम करेंगे। What if a value कैन नॉट बी कन्वर्टेड। सो अब ये भी हमारे पास केस आता है कि जो वैल्यू है वो रिटर्न ना हो सके। ठीक है, if the Python value is raised with the type of passed argument to function is unexpected incorrect. A non-integer strike like a cannot be converted into integer, we will raise an error. So अगर आप नहीं करोगे a cannot be converted into integer तो वो एरर रेज कर देगा अगर ये नहीं होगा। Converting data types into existing array. So data type को existing array में जब हम, the best way to change the data type of an existing array is to make a copy of the array with the as type method. So the as type function creates a copy of an array and allows you to specify the data type of the parameter. The data type can be specified by using the function string like f for float, I for integer, etc. You can use the data type directly like float for float and int for integer. Change data type from float to integer by using parameter as I. And यहाँ पे example है 2 number is 1:1, AR is equal to 1 as 1:1, so 2:1, 3:1, new AR is equal to array dot as type I. So ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं सारी। तो एक एग्जाम्पल है डेटा टाइप फ्लोट इंटीजर को इंट में कर दिया इसने कन्वर्ट, तो इसने बूल में कर दिया। बस यही आपको इंट चेंज करना है, बूल चेंज करना है, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें वो आपको वो लिखना है। तो अब यहाँ पे आ गया the difference between copy and new. The main difference
copy, and view is the copy is a new array, and view is just a view of the original array. The copy owns the data, and any changes made to the copy will not affect the original one, whereas the changes made in original will not affect the copy. इफेक्ट कॉपी में कुछ भी करिए, दूसरी कॉपी में तो कुछ भी करिए, वो ओरिजिनल को कोई इफेक्ट नहीं करेगा ओरिजिनल। और अगर उसको जब तक आपने क्या बोलते हैं, जब तक आप इक्वल नहीं कर देते हैं, दोनों को इक्वल टू नहीं लगते थे, तब तक वो तो इफेक्ट ऐसे भी कुछ डालता नहीं। सो the difference between copy and view. The view does not own the data, and any changes made to the view will affect the original. View में आप जो भी है वो changes करोगे वो आपको जो है ओरिजिनल में भी दिखेंगे, और जो कॉपी में था कॉपी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो go numpy np array is equal to numpy 1 to 4 x is equal to arr dot copy arr 0 is equal to 42। सो ये भी ठीक है। एंड नाउ कॉपी भी बना के देख लेते कि मेक अ कॉपी चेंज द ओरिजिनल एंड एरे डिस्प्ले द बोथ। अब ये जब हम करके देखेंगे तो देखो कॉपी वाले में और इस वाले में दोनों अलग अलग है, कोई मतलब चेंज दोनों में आ गया, उसने ओरिजिनल वाले को कोई इफेक्ट नहीं किया। फिर अगर हम दूसरे वाले में करेंगे तो इफेक्ट जरूर आएगा। व्यू make a view change the original array and display both arrays। make a view change the original array and display both array। ठीक है। import numpy as np ar is equal to np dot array 1 2 3 4 5 x is equal to arr dot view arr 0 is equal to print arr x। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं x को। सो प्रिंट जब x को करेंगे तो ये तो सिंपली आंसर हमारे पास आएगा। The view should be affected with the changes made to the original view। व्यू में जो चेंजेस है तो ओरिजिनल चेंजेस में रिफ्लेक्ट होंगे। उसका एक एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या आ रहा है इसमें नहीं। ट्राइड योर करेंगे तो हमने सेकंड वाले में कुछ चेंज किया तो फर्स्ट वाले में भी चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। चेक इफ एरे ओन्स इट्स डेटा। अब हमें ये चेक करने का है कि एरे क्या अपना डेटा जो है वो ओन करता है कि नहीं ओन करता। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, तो ये कैसे बता सकते हैं इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट numpy एज np 1 2 3 4 5 है, एक कॉपी है, एक व्यू है। सो प्रिंट बेस y डॉट बेस एंड y डॉट देख लेते हैं, पता लग ही जाएगा। सो पहले वाले में तो नन है, कॉपी हुआ ही नहीं, बेस आया नहीं, एक्सपोर्ट पे बेस y डॉट बेस का 1 2 3 4 5, यही आंसर आना चाहिए हमारा। कॉपी वर्सेस न्यू हमारा हो गया। आ गया numpy array shape। numpy shape of an array, the shape of an array is the number of elements in the each dimension। shape of an array क्या है, the number of elements each dimension है। get the shape of an array, numpy array have an attribute called shape that returns a tuple with each index having the number of the corresponding elements। example, print the shape of 2D array। so when you will print the shape of 2D array, import numpy as np arr is equal to np dot array 1 2 3 4 5 6 7 8 and print arr dot shape। so try it yourself। the example shows how above returns 2, 4, which means that the array has 2 dimensions, where the first dimension has 2 elements and the second has 4। okay, so create an array with 5 dimension ndim using a vector values, verify the last dimension as 4। import करेंगे numpy as np जो भी है 1 2 3 4 ndim is equal to 5, print arr, print the shape of the array arr dot shape। so ट्राई करके देखते हैं। तो पहले वाले में हमने क्या था, फोर में ndim 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ब्रैकेट है, मतलब ये काम किया इसने अपना। अब शेप ऑफ एरे क्या था, एरे की जो है शेप लिख देगा, तो 1 1 2 1 1 1 1 एंड 4 जो है वो लिख देगा। तो अब हम करते हैं अगला,
What does the shape tuple represent? What does the shape tuple represent? So integer at the index tells about the number of elements that the corresponding dimension has. In the example above, at the index 4, so we have the value 4, so we can say that the fifth 4 plus 1 dimension has 4 elements. So अब हम ये जो नंपायर रिशेप है ये हम अगली वीडियो में अब करेंगे.